जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी केस में सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सरबराही 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 11 साल कबल दायर करदा दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। अदालत के मुताबिक अदालती मुअव्विनीन को नोटिस जारी करके जवाब दिया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया था। आखिरी बार सदारत 2012 में सुनाया गया। बदकिस्मती से रेफरेंस उसके बाद सुना ही नहीं गया और ज़ेरे इल्तिवा रहा। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवालात भी उठा दिए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी है और इसमें नजरसानी की दरखास्त खारिज हो चुकी है। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 में हुई थी। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोस है इतने अरसे सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हुई। उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत सदारती रेफरेंस चलाना चाहती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्हें मुझे हिदायत दी हैं कि सदारती रेफरेंस हुकूमत चलाना चाहती है। By the said judge, titled Constitution, Law and Pakistan Affairs, italics में कर दें, and published by locally published, ठीक है? ये किताब हमें मिल गई, so आप भी देख लीजिएगा। Full stop. Mr. Farooq Naik, let notice be issued to. I've also heard an interview of Justice Zorab Patel. Justice Zorab Patel ki bhi hai. We can provide the transcript as well as the video. I can do that. You will do all of these things. I'll do it. Mr. Farooq Naik states that there was also an interview given by Justice Zorab Patel. And he will be providing the actual interview on a, what do you call it? On a YouTube, we'll provide a CD plus USB. CD plus USB. Oblique USB, and provide a transcript thereof. Full stop. Let notice be also issued to Geo Television because they may have some footage where they did not show. Sometimes if they cut out just important bit, to provide the entire interview that was referred to interview that was conducted by Mr. Iftikhar Ahmed. Correct? Yes, sir. So we have covered this. So इसमें under instructions अगर sir फाइंडिंग थी शफी रहमान साहब की जो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग थी उसका क्या सर? उसकी वो ट्रिब्यूनल का वो रिपोर्ट मंगवा लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आई नहीं है अभी तक नहीं आई है सर। वो आपने फरमाया कि वो तो पब्लिक हो गई, वो पब्लिक हो गई थी। कैसे पब्लिक भी हो गया? कंप्लेंट का रिकॉर्ड था, वो हाई कोर्ट से नहीं आया। प्राइवेट कंप्लेंट का रिकॉर्ड informs us that it is available. जी वो हो गई थी, पब्लिक भी हो गई थी। It is only the private complaint record which the Lahore High Court could not send and which hasn't been sent thus far. उसमें रेफरेंस होगा ना रिपोर्ट में? Mr. Farooq Naik, रेफरेंस रिपोर्ट में होगा। If you're going to have people standing behind you who do nothing other than show their face, no sir. I'm not asking you anything. Mr. Farooq Naik, you make them work. Sir, they do work. No. We're not saying anything. Okay, I understand. You make them work. Definitely, sir. Okay, so now we are told that report is available. The report. The report is available. It was made public by the government. No, the Supreme Court. Only the private. I'm appearing on behalf of Supreme Court Bar Association, sir. Notices were sent. Okay. Asma Jahangir साहिबा को दिया था ना? No, my lord.
नहीं उसमें दिया था ना नोटिस. She was president. Yes, my lord. So what about the president? Sir, he's going alive. No, I know you are the secretary. Do you represent the president? No, sir, secretary. I'm secretary, sir. No, we know you are secretary. President, sir, वो बाहर गए, sir. अच्छा, इसमें मजीद लिखें, इसमें लिखें. In an earlier order, the president, the Supreme Court Bar Association was also issued notice, and the late Ms. Asma Jahangir was representing SCBA. Full stop. In case SCBA wants to be represented before this court, let them nominate a counsel of their choice. अगर पाकिस्तान बार काउंसिल को भी कर दें सुप्रीम कोर्ट बार के साथ. I don't know, they may not be जो interested. अफरीदी साहब जो थे ना, अफरीदी साहब नुमाइंदे करे थे पाकिस्तान बार काउंसिल के. As a Micus. जैसे आपकी ये तो वैसे रिकॉर्ड है. तो जो भी आ जाए, we can't force him to come. No, but we can't force him. If he's alive, then he should come. No, we're not. देखिए, Kasuri Sahab, it's not a question of defending anybody. It's just a question of a presidential reference. If he wants to come before us, certainly we'll hear him. We will not stop anyone unless it's completely irrelevant. Then we won't allow, or people coming and using the rostrum to make some sort of a speech. That what we won't permit. We will only hear constitutional and legal arguments, particularly pertaining to the scope of the advisory powers, and if we are satisfied, we proceed further. How to proceed further, those are aspects which we will consider. जी, इसमें please write further with regard to the matters. We expect to be assisted on the questions which have already been framed by this court, by the learned, by this court. Full stop. Office is directed to send a copy of the reference along with all orders to the learned amicus to attend to the reference and the questions noted in order dated 21 April 2011, as well as those mentioned herein. Now, we may add after discussion some or better formulate questions later, but these are just roughly what we are saying. With regard to the criminal aspect of the case, we need to be assisted on the scope of direct criminal trial in a murder case by the High Court, precedents in this regard, the scope of whether there was any objection. How the trial came to be conducted by the High Court, and if there were any objections to the trial being conducted by the High Court, and if so, how the same were attended to, how the objections were attended to. Full stop. We also need to be assisted on the evidence, the significance of the evidence of approvers. Anything else? That's it, sir. There's a question of motive as well, because the case turned on the question of motive, but that is. Why is he not coming forward? Evidence. मोटिव पे जी साहब आपने ये भी देखना कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं इनके रीजंस क्या होते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, मकसद क्या. Question of motive तो था in the context of motive of the former prime minister in regards to the commission of offence. सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट But यहाँ पे bias का question था. बाइस, लीगल बाइस बड़ा इम्पोर्टेंट है. लीगल बाइस. ये बताएं शाहिद साहब कि have you read the judgment? Yes, exactly, sir. Any criminal issue that you want attended to? Come to the mic.
आपने तो बेसिकली एक अप्रूवर का इशू रेज किया हुआ है कि अप्रूवर के स्टेटमेंट के ऊपर कन्विक्शन रिकॉर्ड हुई है। Admissibility of the confession, sir, since the person Confession of whom? confession of Masood approver of Masood Mahmood. The comma इसमें लिख दें admissibility or otherwise of the confessional statement of an approver and the scope and its application to a co-accused. Exactly, sir. Okay. And in the legal bias in the Legal bias will be the constitutional or criminal? criminal होगा sir, not constitution में तो आपने 186 के parameters set करने हैं. The question of legal bias, Legal bias, if any. Anything else? That's it sir. Okay. सर इसमें एक जो आपने नाम लिखा है अंडर इंस्ट्रक्शंस फैसल सिद्दीकी का नाम, we object to the name of फैसल सिद्दीकी as amicus. Why? Because of reasons क्या कहते हैं, government's reasons क्या कहते हैं. There are reasons behind it. I don't want to disclose it in the बस we object to it. हम देख लेंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे. कसूरी साहब, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? इसमें जो किसी नाम पे कोई और नाम आपको याद आ गया बता दें. कोई और नाम आपको याद आ गया हमें बता दें. प्राइवेट वो हमने कर लिया उनको. ठीक है, वो तो आ गई ना. तो हम we will discuss amongst us. ठीक है. Please don't consider this the order. No. Wait for the written order. Right. We know. It's always good to state what is in our mind. Written order is the only order. Anything else you want to say? Or have we covered everything? आप बोल देना. Salman Sabr ka. We will fix it in the second week of January. The week starting 15th January. Sir, another name which we are Mr. Salman Sabdar's name. वो आ गया. And we object to it. Oh, you object to it. How do you objection करते हैं? Salman Sabdar. Under instructions I'm stating. वो तो कोर्ट के फ्रेंड्स होते हैं. ये आप पर है सर. No, ऐसा वो तो कोर्ट के फ्रेंड्स हैं. presidential reference the Attorney General is conducting. जी. So, सर हम नोटिस पर हैं तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत मुलतवी कर दी गई है। आगाह करेंगे आपको इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी केस में सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत जारी थी, जो कि अब जनवरी तक के लिए मुलतवी करने का फैसला किया गया है। और ये भी आपको बताएं कि ये सदारती रेफरेंस आसिफ अली जरदारी के दौर में दायर किया गया था, जिसकी समाअत भी हुई थी, 6 समाअतें हुई थी उसकी, लेकिन कोई फैसला इस सदारती रेफरेंस पर नहीं आया था। 2012 के बाद इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई समाअत नहीं हुई थी, लेकिन अब ये दोबारा समाअत की जा रही है और ये 11 साल के बाद दोबारा इसकी समाअत हो रही है। पहली समाअत है जो आज हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है और इस अहम तरीन समाअत को जनवरी तक के लिए मुलतवी करने का फैसला किया गया है। Yes, sir. We'll move some CM also for bringing to certain documents, additional documents and records. I'll do that. Before the date of hearing. No, not then. Do it today, tomorrow. We'll incorporate in the order right now. Okay, sir. Otherwise, it will get delayed again. If you want to delay it, fine. No, we don't want to delay it. We want to delay it. We just give us 2 days, only 2 days. No. By tomorrow we'll Please, do it. by today. By tomorrow. By this evening. We'll file the CM by tomorrow. No, CM, you just tell us what documents they are. Sir. Okay, you want to give a CM by Sir, वो tomorrow. जो 12-11 के अंदर है. Okay, then the order will not be signed till tomorrow. No, sir. The documents which are mentioned in the If it considered necessary, we'll incorporate that in the order today. Okay. Otherwise, we'll have to wait for the next date of hearing to pass an order, which will further delay the matter. We will file. You've understood it? So tomorrow file it. So we won't sign this order till today. And if we find it necessary, we'll incorporate those things in the order as well. By mid-afternoon tomorrow it will be filed. Before mid-afternoon, my lord. Anything else? It is January. G, we would want your assistance as well. Thank you, gentlemen. Thank you, sir. सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समात पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी केस के हवाले से जारी थी, जो कि अब जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्सोरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अबरार, आगाह कीजिएगा, समात तो अब जनवरी तक के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन अभी जो समात का अहवाल रहा वो क्या रहा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो के रेफरेंस के हवाले से केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की और अदालत ने केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी और अदालत ने कहा है कि उसके बाद समाअत जब शुरू होगी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। आज दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत के सामने पेश हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वकील फारूक नाइक अदालत के सामने पेश हुए, जबकि दूसरी जानिब जो अहमद रजा कसूरी थे वो भी अदालत में पेश हुए। इस दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हर कानूनी वारिस का हक है कि उसे सुना जाए। केस की समाअत लाइव लिंक से नशर हो रही है। सवाल ये है कि ये सदाती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत इसको अब भी चलाना चाहती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि मुझे हिदायत है कि सदाती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। अदालत ने रेफरेंस में पेश होने वाले वकला के नाम भी लिख दिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पहले ही टेलीविजन पर लाइव नशर की जा रही है और वकील फारूक नाइक ने इस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि सदाती बेंच में मौजूद किसी जज ने सदाती रेफरेंस पर पहले समाअत नहीं की। एक सीनियर जज ने कहा कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जबकि 2 दीगर जजेस ने भी केस सुनने से माजरत की। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि जब दलाइल शुरू किए तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि कौन से सदर ने ये रेफरेंस भेजा था, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि ये रेफरेंस सदर आशिफ जरदारी की जानिब से भेजा गया था। चीफ जस्टिस ने सुधार किया इसके बाद कितने सदर आए, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इनके बाद 2 सदूर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले रेफरेंस मुकर्रर न किए जाने पर चीफ जस्टिस की जानिब से इज़हार अफसोस भी किया गया। इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि आप रेफरेंस का टाइटल पढ़ें और अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस में उठाए गए सवालात अदालत के सामने रख दिए। रेफरेंस में जज के तासुब से मतलब आसिफ जरदारी से 2001 का भी हवाला दिया गया। तो जस्टिस मुस्तर जिलानी ने अदालत में कहा कि क्या लाहौर हाईकोर्ट में ट्रायल के दौरान बेंच पर इफ्तार की कोई दरख्वास्त दी गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक कई दरख्वास्तें दी गई थी। वकील फारूक नाइक ने कहा कि नसीम हसन शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया उन पर दबाव था, और दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि माननी पड़ेगी किसी न किसी वजह से उन पर दबाव था। फिर 2018 में भी रेफरेंस पर समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की, ताहम समाअत नहीं हो सकी और नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के बाद भी ये मामला चलता रहा। इसके अलावा दौरान समाअत अहमद रजा कसूरी ने कहा कि नसीम हसन शाह का एक अखबार में इंटरव्यू का हवाला दे दिया गया है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा क्या आप जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू पर इंतजार करेंगे। वकील फारूक नाइक ने कहा कि मैं इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो पेश करूंगा, जबकि जस्टिस जमाल मंडोखेल ने कहा कि नसीम हसन शाह ने जो बयान दिए क्या आप उन पर इंतजार करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी साहब आप दलाइल जारी रखें और सदाती रेफरेंस की नुमाइंदगी किसने की थी। एडवोकेट बाबर एवान इस वक्त सदाती रेफरेंस में वकील थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बाबर एवान कमरे अदालत में मौजूद हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाबर एवान इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद नहीं है और अदालत की जानिब से 6 से 7 जो माउनीन है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं और अब जो समाअत है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन अस्सोरी अपडेट करने के लिए। आगाह करेंगे आपको कि जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी केस में सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत जारी थी, जो कि अब जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सरबराही 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की इस सदारती रेफरेंस की समाअत की और अदालत के मुताबिक अदालत मुअव्विनीन को नोटिस जारी करके जवाब दिया जाएगा। और हुक्मनामे में कहा गया है कि आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया था। आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया।